നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ ഇടുങ്ങിയ ഹൈവേകൾ വികസിപ്പിച്ച് ആറുവരിപ്പാതയാക്കി മോദി സർക്കാർ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണെന്ന് BJP ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ JP നദ്ദ. ദേശീയപാത 66-ന് 55,000 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്. 1266 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ പാതയുടെ നിർമ്മാണം ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും BJP തിരുവനന്തപുരം പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം വിശാൽ ജനസഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കന്യാകുമാരി കോറിഡോറിന് 50,000 കോടി രൂപ മോദി സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് റൂട്ടിലെ യാത്ര ഇതോടെ സുഗമമായി മാറും. മോദി സർക്കാർ രാജ്യത്ത് 54,000 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ദേശീയപാത നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ 4 വരിപ്പാതകൾ 6 വരിയാക്കി മാറ്റി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കേരള സന്ദർശനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ റെയിൽവേ വികസനത്തിന് വേണ്ടി 3,200 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ അദ്ദേഹം കേരളത്തിന് സമ്മാനിച്ചു. കൊച്ചി മെട്രോയുടെ 2ാം ഘട്ടത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പണം അനുവദിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം തുടങ്ങിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് റെയിൽവേ ചെയ്യുന്നത്. 2014 മുൻപ് രാജ്യത്ത് ഒരു ദിവസം 6 കിലോമീറ്റർ പാളമാണ് റെയിൽവേ നിർമ്മിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് 14 കിലോമീറ്ററായി വർദ്ധിപ്പിച്ചെന്നും JP നദ്ദ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മലയാളി ന്യൂസ് ലൈവ്. And Kerala has been playing, but it is not being rightly placed and rightly projected. This is one challenge which I feel that from the national perspective, when we see a lot of contribution has been done by Kerala. A lot of contribution is being done by Kerala. But because of the petty politics of LDF and UDF, the whole good work done by the people of Kerala is getting marred. वह उस पर एक तरीके से धब्बा पड़ता है और वह एक तरीके से राजनीति को एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने खड़ा होता है. हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, under the dynamic leadership of Pradhan Mantri Modi, who has got a vision for the development of the country, and he has got the vision also to see to it how Kerala plays a vital role in that development that we have to understand. When he says Atmanirbhar Bharat, it means that Atmanirbhar of Kerala also. It means development of Kerala also. And I am happy to share with you that in the last 9 years, a lot of financial support has been given for the infrastructural development. You will be happy to note that for infrastructural development, the national highways which have been constructed, the total 54,000 kilometers of national highway has been constructed, and 616 kilometers of metro rail has been constructed in past 9 years. Here also in Kerala, a lot of national highways are being constructed. Your 4-lane is being converted to 6-lane. A lot of financial support is being given. And the same way, if I talk about railway track, per day in 2014, 6 kilometers of railway track was being commissioned. Now, 14 and a half kilometers per day railway lines are being commissioned and they are being made. That we have to understand. If I talk about the national highway, in 2014 it was 12 kilometers. Now it is 29 kilometers per day that national highways are being made. So at what pace the country is going forward, that we have to understand. मित्रों, अगर मैं केरला की बात करूं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सपोर्ट दिया गया है, उसके बारे में भी हमको ध्यान में लेना चाहिए. प्रधानमंत्री पीछे आए थे, उन्होंने 3,200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का श्री गणेश किया या उसका शिलान्यास किया. वंदे भारत ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासरगोड जाने का, यह वंदे भारत ट्रेन नहीं है, ये केरल के मॉडर्न इंडिया का स्वरूप है जिसको हमको समझना चाहिए. उसी तरीके से कोची मेट्रो के लिए उसको भी डेडिकेट करने का, वाटर मेट्रो का भी कार्यक्रम को लिया आगे, और तिरुवनंतपुरम का रेलवे स्टेशन, कोझिकोड का रेलवे स्टेशन, वर्कला का रेलवे स्टेशन, इन सब का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है
और इसी तरीके से डिजिटल साइंस पार्क यह भी तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल केरला में इसका भी फाउंडेशन रख दिया गया है और सेकेंड फेज कोच्चि मेट्रो उसका भी काम शुरू हो गया है। और ऐसे ही अगर हम देखें तो जो मेजर रेलवे स्टेशन हैं एर्नाकुलम का और उसी तरीके से एर्नाकुलम जंक्शन और कोल्लम स्टेशन का, तो उसका भी काम तेज गति से चल रहा है। नेशनल हाईवे 66 ये 4 लेन से अब 6 लेन हो रहा है और 55,000 करोड़ रुपीस आर बीइंग स्पेंट फॉर मेकिंग इट ए 6 लेन नेशनल हाईवे 66 केरला में। 1266 किलोमीटर की सड़कें नेशनल हाईवे में यहां बनाई जा रही हैं और उसका काम चल रहा है। IIT पलक्कड़ में उसका भी फाउंडेशन स्टोन मेन कैंपस का रख दिया गया है। नेशनल हाईवे का जो वर्क है उसमें 19,800 करंटली अभी इस साल दिया गया है। तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो काम चल रहा है उसमें अगर हम देखें कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस विल हैव 1,760 किलोमीटर्स एंड 23 प्रोजेक्ट्स 650 किलोमीटर्स की लेंथ में 23 प्रोजेक्ट्स आएंगे और 50,000 करोड़ रुपीस खर्च होगा, which will take place and it will help Kasaragod, Thalassery, Kannur, Kozhikode, Ernakulam, Kochi, Alappuzha, Kollam, Tiruvananthapuram, इनको वो सपोर्ट मिलेगा, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन केरला इन इंफ्रास्ट्रक्चर दिस ईयर, माइंड माय स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा, 18 lakh crore has been spent since 2014 only on infrastructure, and this year 1 lakh crore is being spent only on infrastructure. That we have to understand. So friends, now when we say the modern India, Viksit India, developed India, so it is full and the infrastructure is of world class order. You see the airports which are being constructed. These airports are of international standards. Now the stations which are being redeveloped, you will see Tiruvananthapuram will have that redeveloped railway station. It will be a world-class railway station which we are going to have here. So these are the monuments of modern India. These are the monuments, these are the symbols of development. These are the symbols of Viksit Bharat that we have to understand. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും ലഭ്യമാക്കാൻ മലയാളി ന്യൂസ് ലൈവ് .com സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.